Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. How are you all? Good evening, Ashma. Good evening, Harmeet. A very warm welcome to Baby Code Free IELTS sessions, all of you. Okay, let's wait for 2-3 minutes for everybody to join in.
Okay, so let's start today's session. Everybody ready? We will talk about part one, that is task, and task one is about report writing. Right? कल हमने report writing का छोटा सा एक structure करा था. Can anybody tell me what is the structure of report writing? मैम वोकैबुलरी किया था Sorry? वोकैबुलरी किया था मैम Yes, but vocabulary में हमने structure भी किया था report writing का. Can anybody tell me क्या structure था? There was a graph like, and Mm-hmm. it was like fall and down, fall and like gradually, dramatically. It was like that, ma'am. Mm-hmm. So basically, how many paragraphs we have to write? हम कितने paragraphs लिखते हैं? मैम ओवरऑल 4 paragraphs are required. First paragraph is introduction and second one is overview, and the third and fourth body paragraphs and no conclusion is required for that. Correct. Yes. So basically, we write 4 paragraphs, right? For academic writing, task one. अब task one क्या होता है? Task one is a visual information, जिसमें आपको graphs मिलते हैं, tables मिलते हैं, chart मिलते हैं, और any kind of a diagram. Basically 6 type होते हैं. 7th one is the combination one. ठीक है? And you have to approach it step by step. Step by step आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखना है. So we will look at first कि कौन सी right approach आपको लगानी है और कैसे step by step आपको सारी skills और strategies की help से task 1 को लिखना है so that you can achieve higher. Task 1 is 33%, right? Task 1 33% की weightage होती है. Task 2 जो होता है वो 66% होता है. Now let's have a look at this कि कैसे features जो हम 7 band के देखेंगे और 7 band above के भी देखेंगे writing task 1 के लिए. Now see this. आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं टास्क 1 में कि समराइज करो इंफॉर्मेशन को बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट. You will need to do an information transfer task here. The visuals you are given needs to be presented in the form of text. So what you are supposed to do is आपको एक विजुअल इंफॉर्मेशन दिया है, आपको उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कहाँ लिखना है, अपने आंसर में लिखना है. अब एज अ पार्ट ऑफ टास्क आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ओवरव्यू लिखना है एंड देन की फीचर्स लिखने हैं विद डेटा. ओवरव्यू में हम कभी भी अपना डेटा नहीं लिखते, वो अमाउंट वो नंबर हम नहीं लिखते. वी राइट ओनली इन बॉडी पैराग्राफ्स, पैरा 1 पैरा 2 में. नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन? जो सबसे पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, उसमें हम क्या लिखते हैं? एनी आइडिया? Yes ma'am, paraphrasing is always required. Yes, correct. Anyone else? It are doing to what we are writing now. Yes, Here. correct. Right, you are telling the examiner that what you are going to write about, है ना, कि आप क्या लिखने वाले हो, आपका टॉपिक क्या है. बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पैराफ्रेज करोगे. जो भी आपका डायग्राम है, जो भी बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, जो भी उसमें डेटा दिया है, किसका डेटा ले रहे हो, कब का ले रहे हो, ये सारी चीजें आप किस में लिखते हो, अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हो. So your introduction is basically you are telling the examiner what you are going to write about, and it is basically the question paraphrase. क्योंकि question में हमने क्या दिया है? Question is nothing but a introduction only. जो Yes. हमारा क्वेश्चन होता है वो और कुछ नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन होता है, जिसको आपको पैराफ्रेज करके लिखना है, राइट? वो विजुअल डायग्राम इज अ डेटा सोर्स, और जब डेटा कलेक्ट हुआ है वो सब आपको वहां पे इंट्रोडक्शन में लिखना है. सो इंट्रोडक्शन कैन बी 1 सेंटेंस,
1 सेंटेंस का भी हो सकता है, राइट? एंड इज द क्वेश्चन रीरिटन इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज पैराफ्रेज. सो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन कितना बड़ा है, राइट? रिमेंबर, अगर आपके 2 डायग्राम्स है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशनल वन है, तब यू नीड टू इंट्रोड्यूस बोथ. तब आप दोनों का इंट्रोडक्शन लिखोगे, दैट मीन्स 2 सेंटेंसेस लिखोगे. बिकॉज मिक्स ग्राफ में आपके पास 2 पिक्चर्स हैं, तो आप दोनों का इंट्रोडक्शन अटैच करके, ज्वाइन करके अपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, you have to write a clear introduction. आपको एक clear introduction लिखना होता है, डिस्क्राइब करते हुए कि आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, राइट? पैराफ्रेज तो करना है आपको अपने क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आप सिनोनिम्स डालोगे, फ्रेजेस डालोगे, राइट? एग्जाम्पल अगर आपको अनएम्प्लॉयड दिया है, तो आप अनएम्प्लॉयड के बारे में क्या लिख सकते हो? पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, है ना? अगर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप उसको चेंज कर सकते हो. 10 इयर्स का दिया है तो क्या लिखोगे? डिकेड. 100 इयर्स का डेटा दिया है तो क्या लिखोगे? सेंचुरीज, राइट? सो आप कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें यूज करते हो? डेट्स, टाइम्स, कंट्री, जेंडर, जो भी आपका इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्लियरली आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? इंट्रोडक्शन में लिखोगे. So your introduction will always, you will write. Now what are the do's and don'ts? क्या do's and don'ts है आपके introduction के? कि write a clear introduction to describe what you see. जो भी आपको दिख रहा है कि आपका डेटा किस चीज से रिलेटेड है, वो एक सिंपल स्टेटमेंट आप लिखोगे. पैराफ्रेज करो अपने क्वेश्चन के प्रॉम्प्ट्स को. कीवर्ड्स का यूज करो इंट्रोडक्शन में. कीवर्ड्स एज इन डेट्स क्या है, टाइम क्या है, कुछ कंट्री से रिलेटेड है, जेंडर से रिलेटेड है, एक्सेट्रा, राइट? इंट्रोड्यूस ऑल चार्ट्स, डायग्राम्स और टेबल्स. आपको सबको इंट्रोड्यूस करना है. नाउ सी दिस, व्हाट आर द डोंट्स? इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं करना, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रे लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल की एम्प्लॉयमेंट, ब्लैक ट्राइंगल मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सब इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आपको नहीं लिखना. ओके? कॉपी द Okay, ma'am. क्वेश्चन प्रॉम्प्ट वर्ड फॉर वर्ड. बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपका क्वेश्चन दिया उसको वर्ड टू वर्ड कॉपी करना. नो, क्वेश्चन में से कोई भी फ्रेज नहीं लेना आपको. यू हैव टू राइट योर ओन पैराफ्रेजिंग. खुद के सिनोनिम्स ऐड करो. चेंज द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन टू इनएक्यूरेट सिनोनिम्स. इनएक्यूरेट सिनोनिम्स में चेंज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन ऑस्ट्रेलिया टू अनएम्प्लॉयड गर्ल्स लिख दिया आपने. फीमेल मीन्स all females here, girls means you're referring to only particular age group. Okay, so that means Yes. आपने यहाँ पे inaccurate word लिख दिया. Girls and females are all not same, right? So girls is particular, एक age group को girl बोला जाता है. So you have to be careful कि आप जब synonym add करोगे वो carefully add करो. Inaccurate आपको add नहीं करना. Okay, ma'am. Now we will look at some of the introduction sample. First, let me ask you people, how do you generally start your introduction ka statement? Tell me any statement. By paraphrasing the sentence. I'm asking that Like if sentence there are only. some statistics, like if it has some statistics in it, then I supposed to change it into synonyms and as well as data changing. So how do you start basically? I am asking that question. कि क्या लिखते हो first statement? Now suppose you have a bar graph. तो क्या लिखोगे? The bar graph gives the information I think about. Ashna, your network is not fine, dear. Like this, ma'am. This graph illustrate the information about this and this. Correct. Yes. Like The the bar bar tells One by graph one, gives the please. information. One by one, please. Yes.
the bar graph depicts that, or the bar graph illustrates that, Hmm. or the bar graph tells about that, or the bar graph Not provides tells. information about. No tells. This is formal writing. We will not write tells. The given bar graph compares this. Okay, Jasleen, correct. So we will use certain words and phrases. The bar graph illustrate or the table illustrate. The chart compares. The diagram illustrate, depicts, elucidates, right? So you have to use different words. Now let's look at introduction के samples. The very first statement जो अभी हमने do's and don'ts करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे अपने स्टेटमेंट को चेंज करना है. नाउ सपोज इफ इट्स अ टेबल, अगर आपके पास टेबल आता है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अगर टेबल आता है, राइट, सो द टेबल illustrates employment numbers in Australia over a 30-year period from 1970 to 2000. So आपने 1970 to 2000 is 30 years, है ना? तो आपने मेंशन करा कि ओवर अ 30-year पीरियड, और कब से कब तक, 1970 to 2000, वो आपने मेंशन भी करा. और आपका टेबल क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट नंबर्स डिस्क्राइब कर रहा है. कहाँ की कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया की कर रहा है. सो यू आर गिविंग अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट. आपने अपने पूरे टेबल का डेटा एक सिंगल सेंटेंस में कंबाइन करके लिखा. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे लिखो. whether you are writing a one statement, that doesn't matter for examiner कि आपने two क्यों नहीं लिखा या three statement में क्यों नहीं लिखा. अगर आप one sentence में ऐसे लिख सकते हो, that means you can logically show your ideas, right? Now see the chart one. The chart compares the number of cars that were made in France, Germany and Norway over a decade. So decade is 10 years. 10 years. 10 From years. 2000 to 2010. Please write down these statements if you have pen and paper. Do follow this, because students are so confused with how to start your report writing, how to write an introduction statement. Diagram. Diagram का कैसे लिखते हैं? Because diagram can be a process diagram, a map diagram or any other diagram. So the diagram shows how car parts are assembled. Process, the cycle shows how man-made. Okay, Gagan, no problem. The cycle shows how man-made fibers are produced. Map. The map illustrates changes in an English village over a century, 100 years, 1915 to 2015. 100 years का डेटा दिया है आपको. So that means over a century. The graph represents the data from Ireland showing cinema attendance in major cities in 2016. So ये single year का है, but it is of different cities, major cities के बारे में. So 2016. यहाँ पे एक ही टाइम ड्यूरेशन है, एक ही टाइम पीरियड है, but they are showing different cities. Now two pie charts. अगर आपके पास two charts आ जाते हैं, so how you will write? अब आपके पास mixed है, combination है. So first is pie chart, second is table. तो आप कैसे लिखोगे? Pie chart shows the main energy resources used to generate power in a town in Australia, while the table shows how much energy was consumed by the community in 1989. Clear? Yes, ma'am. Any doubt now in introduction statement? No, ma'am. Sure? Yes, ma'am. No, ma'am. So what we do now, quickly I am giving you
Okay, now quickly write down this question. Quickly write down. Or shall I send you this in the chat box? But I want you to speak quickly about it. Now, can you see in the chat box? Yes, ma'am. So quickly have a look. The chart below shows the number of Japanese tourists traveling abroad between 1985 and 1995 and Australia's share of the Japanese tourist market. Ma'am, we have to rephrase this question. Yes, quickly you have to do this. Okay. In the chat box? No, you have to speak only. Okay. Actually, the charts here is, two charts are here. The first chart is bar graph and the second is line graph. See the statement, the charts below. There are two charts, right? Ma'am, we have to write the exact question or rephrase them. You have to rephrase. Okay. Why statement is not visible? Can everybody see the statement in Yes. the chat box? Chat box. Ma'am, I don't know. Zareen, look at the chat box, please. Ma'am, I'm looking at it, but it's not showing. I'm gonna send again. See this. So the charts means there are two charts. The charts below show the number of Japanese tourists traveling abroad between 1985 and 1995 and Australia's share of the Japanese tourist market. This is for second chart. I hope everybody understood what they are supposed to do. Yes, ma'am. So quickly rephrase it. It doesn't take much time. Ma'am, can I tell? Yes, Zareen, please. The given former chart shows information about the number of Japanese visitors who traveled abroad from 1985 to 1995, whereas the later chart shows depicts Australia's share of the Japanese tour market. Yes. But you can talk about 1985 and 1995 between the years. It's a period of 10 years. Oh, yes. Yes. So try to add Over your a time keywords. period of over Exactly. over a decade. Yes, Over a decade. Sorry. From 1985 to or between 1985 to 1995. Yes, ma'am. So traveling abroad means you're moving overseas. So Japanese, they are Yes. traveling overseas. Okay, let's move Yes. forward. Now see, once you write your introduction, you have to write the next statement, which is about overview. Now, overview means what? The overview in your response should summarize what you see in the diagram. And it should summarize the main trends, changes, developments, stages, or any noticeable feature.
तो आपको ओवरव्यू में क्या लिखना है कि क्या ट्रेंड दिया है वहां पे, मेन ट्रेंड क्या है, मेन हाईलाइटेड फीचर क्या है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, अगर कोई डेवलपमेंट मैम, हो रही है. यस. Ma'am, in overview, we don't have to show any kind of statistics. Yes, we We do not just write have to any data. mention the Yes, overview by correct. not showing any kind of data and numbers, and just to mention changings and alterations. Correct. Gagan, while the another chart, while Australia share of Japanese student market, आपने इसको पैराफ्रेज नहीं करा, so please do it. ये सेकंड वाले चार्ट का इंट्रोडक्शन है. So in this overview, what you are supposed to do, आपको अपने main trends, main changes या कोई stages हैं, because it can be process also. So वो सब आपको किस में लिखना है, overview में लिखना है. यहाँ पे आपको कोई data नहीं देना कि इतना परसेंट है या इतना परसेंट डाउन हुआ है. नो, नथिंग. ठीक है. तो लेट मी आस्क एवरीवन कि आप ओवरव्यू कैसे स्टार्ट करते हो. यस. उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट कि ओवरव्यू, जब भी हम टास्क अचीवमेंट देखते हैं बैंड डिस्क्रिप्टर्स का, नाउ सपोज अगर आपका बैंड 5 आया है या बैंड 6 या बैंड 7 आया है, तो वो क्यों आता है? बिकॉज बैंड 6 इज कि आपने रेलेवेंट ओवरव्यू को अटेम्प्ट करा है. बट बैंड 5 इज देयर मे बी अ टेंडेंसी टू फोकस ऑन डिटेल्स विदाउट रेफरिंग टू द बिगर पिक्चर. दैट मीन्स आप लिख सकते हो बट यू हैवंट डन दैट केयरफुली. आपने रेलेवेंट ओवरव्यू सिर्फ 6 बैंड्स के अकॉर्डिंग लिखा है, बट 7 में सी बैंड 7 presents a clear overview. Data are appropriately categorized and the main trends or differences are identified. तो अगर आपने वो आइडेंटिफाई नहीं करे ट्रेंड्स और उसे नहीं लिखा, दैट मीन्स यू आर ऑन ईदर 6 और यू आर ऑन 5. सो अगर आप क्लियर ओवरव्यू लिख रहे हो तभी आप बैंड 7 में जाओगे, नहीं तो आप 6 में ही स्टक रहोगे. सो मेक श्योर जब भी आप अपनी पिक्चर को एनालाइज करते हो, उसके मेन ट्रेंड्स या जो भी डिफरेंसेस हैं उसमें, आप उन हाईलाइटेड की फीचर्स को अच्छे से कैटेगराइज करो. ओके. नाउ Yes, ma'am. व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ ओवरव्यू. क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना. Make sure you use linking words to summarize what you see. Linking words का use करो. Overall, to summarize, in summary. You can use these words in your overview. Look for trends in the diagram. क्या कुछ ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है. कल हमने एक ग्राफ करा था जिसमें हमने सारे वेरिएशंस करे थे. स्लाइटली इंक्रीज हुआ था, देन शार्प इंक्रीज हुआ था, प्लम्ड हुआ था, देन स्टेबलाइज था, और उसके बाद डिक्लाइन Dramatically था. decrease. यस, उसके बाद डिक्लाइन था. सो आपको वो सब चेक करना है कि आपके ग्राफ में, आपके पिक्चर में कुछ ओवरऑल इंक्रीज है, डिक्रीज है, फ्लक्चुएशन है, क्या है, कुछ हाई है, कुछ लो है, स्टेबल है, क्या हो रहा है आपके ग्राफ में. आपको वो सारे ट्रेंड्स वहां पे चेक करना है. If the visual diagram shows future prediction, तो समराइज करो फ्यूचर ट्रेंड को अपने ओवरव्यू में. अगर आपको कुछ फ्यूचर का दिख रहा है उसमें प्रोडिक्शन, कुछ आपको विजिबल है, आपको डेटा दिया है, तो आप वो भी समराइज करोगे उसमें. हाईलाइट एनी चेंज इन द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ योर विजुअल डायग्राम. कोई भी चेंज दिया है तो आप उसको हाईलाइट करोगे, उसको आप लिखोगे ओवरव्यू में. राइट. इट कैन बी डिक्लाइन, इट कैन बी इंक्रीज, कुछ अपवर्ड ट्रेंड है, कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड है, यू हैव टू राइट दैट. नाउ व्हाट डोंट, क्या चीजें नहीं लिखनी है. इंक्लूड डेटा और फिगर्स इन योर ओवरव्यू. कोई डेटा, कोई नंबर्स, कोई फिगर्स कुछ नहीं लिखते हैं ओवरव्यू में. ओनली इंक्लूड अ समरी ऑफ मेन ट्रेंड्स और फीचर. सिर्फ आप बताओगे कि कुछ इंक्रीजिंग है, कुछ डिक्रीजिंग है, क्या हाईलाइटिंग है यहाँ पे. Identify everything in the overview. It should just be a summary statement of most noticeable features in the diagram, and then highlight key features with data figures.
ये नहीं लिखना आपको, डेटा फिगर्स नहीं देने यहाँ पे, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, how do you start your overview statement? Tell me. Ma'am, kindly give an example so Yes, that I'm asking we can make examples from overview. you. I'm first asking Okay, examples fine. from you, then I'll give you my example. Yes. Now, suppose it's a bar graph. So, how will you start? First is overall. Overall, first of Yes, all, we will write overall. exactly. Overall, it is evident from the graph, it is evident from the pie chart, or it can be clearly inferred from the graph, or it can be clearly seen from the graph. है ना? हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना. So what words you are going to use? अभी हमने पढ़े हैं वो words कि हमें कौन कौन से words का use करना है. So see, जो introduction statements अभी हमने पढ़ी, so this is introduction plus overview. Table हमने पढ़ा था, right? The table illustrate employment numbers in Australia over a 30-year period from 1970 to 2000. अब अगर हम उसी का overview लिखें, overall, it can be clearly seen that numbers of people employed have increased over the period. So that means उसमें जो trend होगा वो increase हो रहा था. Whereas the unemployed figures have remained stable. अब देखो employment number थी, तो मे भी हो सकता है उस पिक्चर में employed और unemployed का figures दिया आपको, तो आपने दोनों का ट्रेंड बता दिया कि employed जो है वो तो इंक्रीज हुए हैं और जो अनएम्प्लॉयड थे वो स्टेबल रहे हैं. तो आपने दोनों ट्रेंड बता दिए, राइट? क्लियर? Okay, ma'am. Yes, नाउ ma'am. सी द चार्ट वन. चार्ट में हमें क्या दिया था? द चार्ट कंपेयर्स द नंबर ऑफ कार्स ओवर अ डिकेड. सो इन ब्रीफ, Germany was the major producer of vehicles over this period, followed by France and Norway. So number of cars का था यहाँ पे, कंपेयर कर रहे थे नंबर ऑफ कार्स जो कहाँ कहाँ बनी है, फ्रांस में, जर्मनी में, नॉर्वे में. हमें एक डेटा दिया नंबर ऑफ कार्स का, तो यहाँ पे कौन सी जो है कंट्री नंबर ऑफ कार्स ज्यादा बना रही है? सो इट वाज जर्मनी. जर्मनी के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद नॉर्वे है. सो दैट मीन्स हाईलाइटेड की फीचर कौन सा है? जर्मनी, बिकॉज ही इज द मेजर प्रोड्यूसर, राइट? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्वे इज द लीस्ट प्रोड्यूसर. इट्स अबाउट यू हाउ यू आर मेकिंग योर सेंटेंसेस. बट आप हाईलाइटेड फीचर को लिखो. अगर आप जर्मनी के बारे में नहीं लिखोगे, दैट मीन्स आपने मेन ट्रेंड वहां पे लिखा ही नहीं, आपने एनालाइज ही नहीं किया पिक्चर को. ओके, देन डायग्राम. The diagram show how car parts are assembled. It can be seen that there are 4 main stages to car manufacturing. So अब आपकी कार पार्ट्स असेंबल हो रही है, कार मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसमें कितने मेन स्टेप्स हैं आप वो लिखो. उन मेन स्टेप्स के नाम लिखो. टू बी स्पेसिफिक, दीज आर मोल्डिंग, मैचिंग, जॉइनिंग एंड शेयरिंग. क्लियर? एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये समझ नहीं आया तो. No, ma'am. Okay. Now process, it can be clearly seen that there are 6 steps involved in the production of cloth, starting with raw materials and ending with final product. तो आपने complete overview दिया कि आप 6 steps बता रहे हो कि cloth की production कैसे हो रही है, raw material से start होके और end हो रही है final product पे. Map. In summary, in 100 years, the village has experienced major changes, transforming it from small farming village to industrial town. So 2 maps दिए थे आपको. एक small farming village था जो अब industrial town बन गया. तो उसमें क्या major changes हुए हैं आपने अपना overview में बता दिया. कुछ major changes हुए हैं. अब आप की डिटेल लिखोगे, उसमें सारे changes बताओगे. आपने एक overview दे दिया एग्जामिनर को, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने ओवरव्यू दिया, अब आप की डिटेल क्या लिखोगे? सारा डेटा. सेम फॉर ग्राफ. ग्राफ में
It can be seen that younger age groups visit the cinema most, whereas older people rarely attend. Okay? So that means younger age groups जो है, आपने data analyze करा कि younger age groups they visit the cinema most. वो सबसे ज्यादा सिनेमा विजिट करते हैं, और older people they rarely attend. Okay, so highlighted feature is every time कि क्या इंक्रीज है, क्या डिक्रीज है, क्या हाई पे है, क्या लो पे है. अगर आप बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ये सब करो तो आपको यही मेन ट्रेंड्स दिखने वाले हैं. Two charts. So overall, by looking at the chart, it can be seen that oil is used the most as an energy source in this town, and the most power is required for domestic cooling. तो आपने दोनों के ओवरव्यू बताए, highlighted trend. See this. अगर हम key features की बात करें, so band 6 key features which are selected are covered and adequately highlighted. But band 7 which are selected and covered are clearly highlighted. Or band 5 which are selected are not adequately covered. Key features, few key features have been selected. So make sure कि आप band 7 पे lie करने चाहिए, 6 पे नहीं बिल्कुल भी. Right? आप अपने की फीचर्स को सिलेक्ट करो और उसे क्लियरली राइट डाउन करो. नाउ सी हियर, इस टेबल में आपको विजुअल डायग्राम्स एंड व्हाट की फीचर्स मे बी फॉर ईच. जैसे कि अगर आपका ग्राफ है जो शो कर रहा है 5 एज ग्रुप ओवर 2 years, सो दैट मीन्स की फीचर्स क्या होंगे, उसके 5 एज ग्रुप्स होंगे, मेजर ट्रेंड्स दिखेंगे, आउटस्टैंडिंग फिगर्स दैट मीन्स हाई और लो, और 2 years. ये सब आपको लिखने हैं. अगर आपको पाई चार्ट शो कर रहा है 5 टाइप्स ऑफ फ्यूल, तो आप अपने की फीचर्स क्या है कि आप वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल बताओ और मेजर फ्यूल टाइप बताओ कौन सा है उनमें से. ये आपका की फीचर है. अगर आपको मैप शो कर रहा है अ टाउन 50 years ago एंड अ टाउन नाउ, 2 मैप्स हैं, 50 साल पहले वाला और अब वाला, तो दैट मीन्स 2 मैप है वहां पे. और थिंग्स जो रिमेन सेम रही, थिंग्स जो चेंज हुई हैं उसमें, चाहे वो लोकेशन है, रिनोवेशन है, या कुछ रिमूवल है, और थिंग्स दैट आर न्यू. तो ये सब आपको लिखनी है. ये आपके की फीचर्स हैं कि आप की फीचर्स कैसे सिलेक्ट करते हो, ग्राफ में, पाई चार्ट में और मैप में. प्रोसेस में आपको पूरी 7 स्टेजेस बतानी है. अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेप है तो वो भी आपका की फीचर है. चार्ट जो आपको 3 प्रोडक्ट शो कर रहा है 3 years के, तो आपका जो की फीचर है वो तीनों 3 प्रोडक्ट्स हैं, आपके 3 years भी है, और नंबर्स जो नोटिसेबल है, कुछ भी हाई है, लो है, जो भी ट्रेंड है वो आप सब लिखोगे. दैट इज योर की फीचर. सो दिस इज अबाउट कि आप की फीचर कैसे सिलेक्ट करते हो. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस, एनीवन, एनी डाउट? तो अगर आपको सक्सेसफुली एड्रेस करना है अपने टास्क को, डिस्क्राइब करो की फीचर्स को, यूज करो डेटा फ्रॉम द विजुअल डायग्राम्स जो सपोर्ट करे आपके ईच की फीचर को. राइट? नाउ सी band 5. The recounting of detail is mainly mechanical. There may be no data to support the description. But key features में आपको ये फोकस करना है कि अगर आप ओवरव्यू लिख रहे हो देन नो फिगर्स, नो डेटा. बट अगर आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हो तब आपको लिखना है. ओके, नाउ सी दिस. What data should you present to get band 7 or high? Supporting data for each statement. जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी है उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डेटा तो होना चाहिए ना, कि वो कौन से एज ग्रुप का है, उसका फिगर कितना है, ईयर कितना है, वो सब नंबर्स आपको लिखने हैं. नोटिसेबल फिगर्स दैट स्टैंड आउट, हाई लो फ्लक्चुएशन, figures that have increased or decreased, figures that have not changed at all, जो remain same है, level off है, names of buildings on a map, road, pathways, bridges shown on a map,
things that have changed within the visual diagram, things that are new, each stage in a process, any extra step, materials or equipment used in the process. तो ये सब आपको प्रेजेंट करना है अपनी रिपोर्ट राइटिंग में, चाहे आपके पास बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, मैप है, डायग्राम है और कॉम्बिनेशन. इफ यू वांट टू स्कोर 7 और हायर, आपको ये सब चीजें ऐड करनी है. यू कांट स्किप. सिर्फ ये सोच के नहीं चलना कि इट्स 150 वर्ड्स, आप कुछ लिख दोगे और कुछ नहीं लिखोगे. नो, यू आर समराइजिंग द रिपोर्ट. आप समराइज कर रहे हो, तो अपने वर्ड्स में आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो टेक्स्ट की फॉर्म में. Now see this. What are the do's and don'ts? Present the figures given in the visual diagram. Present the correct number scale shown on the visual diagram. Hundreds में है, थाउजेंड. Sometimes students ये चीज mention ही नहीं करते, है ना, कि वो जो फिगर्स आपको दी है, जो नंबर स्केल क्या है, वो 1000 में है, 10,000 में है, किस में है, परसेंटेजेस में है. तो ये आपको एक्यूरेटली लिखना है. करेक्ट नंबर फॉर्मेट लिखना है जब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने फिगर्स को. 100 में है, 1000 में है, परसेंटेजेस में, किस में है, करेक्ट नंबर फॉर्मेट लिखोगे. करेक्ट डेटा को रिप्रेजेंट करोगे. परसेंटेजेस, ग्राम्स, किलोग्राम, पीपल, नंबर, नंबर ऑफ कार्स, नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो भी दिया है वो सब करेक्ट डेटा होना चाहिए. तो इसलिए जब भी इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन में ध्यान रखो कि आप क्या लिख रहे हो. Don't present the data mechanically. Like in 1992, it was 2%, 1993, it was 3%, and in 1994, it was 6%. Majority of students अपना data ऐसे present करते हैं. Correct? Some of you maybe. Is it? Please tell me. Yes. So you are not supposed to do. Don't present data inaccurately. Make sure you read your y-axis very carefully कि उसमें क्या data दिया है. कैलकुलेशंस का यूज करो टास्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए. कैलकुलेट एवरेजेस, जैसे हमने कल करी थी वोकैबुलरी. 75%, 3/4, 20% बिलो अ क्वार्टर, 49% नियरली अ हाफ. राइट? Don't misread the data and present it inaccurately. For example, saying females instead of males. 72% of females play football. तो आपने रॉन्ग डेटा पुट नहीं करना, एक्यूरेट डेटा पुट करना. ओके, सो लेट्स रीकैप. हमने क्या करा? एक इंट्रोडक्शन करा. इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? यस प्लीज, क्विकली. एक क्लियर इंट्रोडक्शन क्या होता है, जल्दी से बता दो. हु नोज? We have to rephrase the question and telling the teacher what we are going to tell them, what we are going to write. तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, हम वन लाइन स्टेटमेंट में ही लिखेंगे. राइट? पैराफ्रेज करेंगे अपने क्वेश्चन को. टाइम पीरियड क्या है और किस चीज का डेटा है, किसको कंपेयर किया जा रहा है, हम ये लिखेंगे उसमें. राइट? Yes. देन ओवरव्यू. ओवरऑल हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे मेन ट्रेंड्स क्या हैं, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसे हम राइट डाउन करेंगे अपने ओवरव्यू में. क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या अपवर्ड है, क्या डिक्रीज है, क्या स्टेजेस हैं, कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर उसमें स्टेजेस हैं. राइट? एंड देन हम क्या करेंगे, अपने की फीचर्स को प्रेजेंट करेंगे. और की फीचर्स में हम कोई मैकेनिकल डेटा नहीं देंगे, एक्यूरेटली डेटा को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन राइट डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी. राइट? एंड एकेडमिक टास्क 1 में कोई कंक्लूजन नहीं आता. So let's look. Yes, who's this? Yes, Titan, please tell me. Could you explain it again? Summary, number 2. Summary means overview. Summary is nothing but a overview we are talking about. So in overview, what do you observe in the picture? Picture में क्या highlighting trend है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है. व्हाट आर द मेन हाईलाइटेड की फीचर. जब हम कोई पिक्चर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा दिखता है?
The feature which is playing a major important role is nothing but a overview, right? Let's analyze this picture quickly. हम इसको करते हैं. See this. Is it visible? So this Yes, chart, ma'am. this gives information. This is a bar graph. Bar chart बोलते हैं इसको. So it gives you information about levels of education. There are different levels of education, that is university degree, school certificate, and no qualification. By age range. So different age groups are given: 16 to 24, 24 to 35, 35 to 50, 50 to 75, and 75 plus. And where? In UK in 2010. So this is for one single year. 2010 का डेटा है ये यूके का, जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन दी गई है बाय एज रेंज. So you have to summarize, compare and contrast, and then you have to write about it. Can anybody tell me about introduction part? Yes, quickly, let's do it. Analyze this picture and tell me about the introduction. Somebody, I can't hear you. Jyoti, your network is not fine, dear. मैम तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद Overview. ओवरव्यू Yes, overview के बाद पूरा key features. पूरा डिटेल्स लिखना होगा. I have to add Overview all में details. no details. Overview में हम सिर्फ highlighting main trends लिखेंगे. उसके बाद हम key features लिखेंगे. I'll show you the sample. First try for introduction and overview. Anyone? Yes, please. It doesn't take much time. The below chart gives the information about levels of education and But different it's trends of. already given, so we have to paraphrase it. Okay, We can't use the same, right? right, ma'am. So the bar chart. The bar chart, the bar chart illustrates information about stages of education, ranging from age groups from 16 to 75 in UK in 2010. And not only 75, this is 75 plus. Plus. Yes. See this. See below. 50 to 75, then 75 के साथ it's plus. Over the age of 75, 75 years in the year 2010. Yes, correct. We can say above the 75. Yes, above the 75. So what do you think? What is the overview here? What is the highlighted key feature here? Overall, it clearly seen University degrees maximum except the last one. University degree, yes. Maximum number of university degree. Speak again. Now what you can do here is you can divide even your data. Younger age group, right? And the older age group also. You can divide also here. University degree is popular among all their age group. But you can't say all the age group. Yes, except, correct. So except for 75. Except for the older bracket, older age, right? Okay. Anybody else?
But overall, it can be clearly seen the degree education of Your voice is not clear. level of education. Okay. And you can also talk about, see, university degree is highest. See this, majority of people are with university degree. अगर हम younger age group की बात करें, that means 60 to 50 years of age group. यहाँ पे देखो 71, 76, 71, ये highest है ना university degree. So university degree, majority of people are with university degree education. That means university education in younger age group. अगर हम older age group की बात करें, so older age group they don't have. That means 72% is no qualification. See this. तो मैम इसमें मेन हमारा मेन तो यही होगा ना, मतलब मेन इज दिस देखो you can't write about, आप particular एक एक को लेके नहीं लिख सकते overview में. एग्जैक्टली Otherwise it's gonna be stretch. That is why I'm saying उसे categorize करो. Younger age group and older age group. So younger age group is like अगर आप 16 to 50 को लिखते हो, so majority of the people are with university education. Whereas if you talk about older bracket, older age group, they are with few or no qualification. So few means अगर हम 50 to 75 देखें तो बहुत कम qualification है यहाँ पे, और 75 plus में no qualification है, because 72% people are with no qualification. So this is your overall overview. Correct? Any doubt? Yes, please. There are different ways to analyze your picture. Clear? Yes, ma'am. Sure? Yes, sir. Now see the sample answer. Read it quickly. See. The chart details age demographics as they relate to levels of education in the UK in 2010. This is your introduction. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that older people, particularly in the oldest age bracket, tend to have no or fewer qualification. यहाँ पे आप younger का भी लिख सकते हो. Looking first of all younger people, then this is the key details. ये आपके key features हैं, ये body paragraphs हैं. Clear? Overview and introduction is clear? Yes. Yes, Now, Yes, ma'am. now Yes, your ma'am. key detail ka paragraph. Younger people, now they have categorized younger people and older people. So younger people, precisely 27% of individuals from ages 60 to 15, because 60 to 50 is younger. So उसमें अगर आप देखोगे, they had no qualification. Can you see here 27%? 999 ये no qualification वाले हैं, तो इनको add कर दिया. Clear? Yes. डेटा रिप्रेजेंट Some of करने के लिए आप क्या करोगे? कंबाइन करोगे. These are 71, 71. आप इन दोनों को सिमिलर लिख सकते हो. 20, 20 इन दोनों को सिमिलर. This is also 20. You have to present your data. Breaking that down further, 20% of the 16 to 24 and 35 to 50 age groups had school certification. So यहाँ पे 20% है ना? See this? Correct? And 71% had university degree. So it's up to you आप कैसे categorize कर रहे हो. Please read it carefully. Younger age group को describe करके then come towards older demographics. फिर आप older age group को describe करोगे. Always categorize your data जब आपको ज्यादा figures given है तो.
Oh, good. Clear? Now, any doubt, please ask me. Yes. Now, any doubt, please ask me. मैम जो आपने जो अभी दिया है जो डिटेल्स ये Yes. पूरा थर्ड पैराग्राफ में होना चाहिए. See, first is introduction, then overview, Okay. then para 1 and then para 2. So para 1 और para 2 जो है आपका उसमें आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो. para 1 में आप यंगर एज ग्रुप लिख दो, para 2 में आप ओल्डर एज ग्रुप लिखो. Okay. This is up to you. Clear? Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Any doubt, anyone? Please do practice मैम for report writing today. Yes. मैम आपने कल वाली क्लास अपलोड क्यों नहीं की अभी तक? आई एम वेटिंग फॉर दैट. Let me see. Okay, I will check. If it is I not have there, checked I'm 10 gonna do times. it. You haven't uploaded that. Okay, I'm gonna do it soon. Okay, don't worry about it. I will do Okay. it just right away. Ma'am, I think you have uploaded. I just saw your class today, your yesterday class. Yes, Vocabulary. ma'am. Yes, Ah, wait. vocabulary. Upload. That Upload was की that was Today. live class 2, na? It's yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, 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 vocabulary is Yes, ma'am. uploaded. yeah, yes, ma'am. Zareen, you're talking about vocabulary session? No, ma'am. Writing task 1. Writing task 1 we are doing just now. How can I upload it before that? No, ma'am. Not this one. It was yesterday's class. Yesterday was vocabulary only. Vocabulary में ही मैंने writing task 1 का little introduction दिया था. मैम वो यहाँ पे फिर क्यों नहीं शो हो रही? कहाँ ओपन पे ही नहीं हो आपको रही. शो नहीं हो रही? आप चेक करो, क्लासेस ओपन करो. देयर आर ओनली 2 राइटिंग क्लासेस और अभी तक हमने 2 क्लासेस करी है. दिस इज द थर्ड सेशन, राइट? ओके. आज हमने थर्ड सेशन करा है ना? जी जी. दिस इज थर्ड सेशन, सो 2 क्लासेस Yes, आर ma'am. ऑलरेडी देयर. Ma'am, 2 classes are there, but it's not opening. I don't know why. But it's opening for me. I'm using the application and I can see this. Refresh, update your app. Okay, Is it ma'am. opening Okay. for everyone? Yes, please. Okay. Yes, ma'am. Even I can show you. See this. This is our live class 2. Okay. Can you see this? Yes, ma'am. So it's opening. Yesterday we did vocabulary. Task 1 की vocabulary करी थी हमने, GT की भी and academic की भी. Okay? Okay. Try to update your app. Okay, ma'am. Update करके then open it. Okay. Okay, ma'am. If not, then let me know tomorrow. Okay. Okay, then please Okay. practice for report writing. Any doubts, we can have it tomorrow. But Okay, do ma'am. practice for at least 1 to 2 questions. Try to write it. Submit your Okay, answers ma'am. on the app. Okay? Okay. Ma'am, today I have practiced for writing task 2 Hmm. and I got 6.5 in that. Wow, that's amazing. Try now task 1 also. Okay? Okay, ma'am. Bye. Take care, all of you. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye.